A very good evening to you. You just check? Good evening. Yes, good evening. You just check what is the topic today and which class is this? You Ma'am, just check? science. Yes, this is the science class and the topic is? Hmm? क्या No? पढ़ा रही थी मैम? No? No, ma'am. Okay. So, the topic is framework of human body. So, what do you understand by framework of human body? What is the frame? Can you tell me something about frame? What is frame? Ma'am, structure. Yes, this structure. So if I am talking about the photo frame, right? So photo is the photo only and the frame is the outer part which on which the frame is exist. Okay. What is the frame? मीन्स जो ऐसा पार्ट जिसमें क्या है जिसकी वजह से जो फोटो है वो वहां पर टिकी हुई है. ठीक है. फ्रेम के अंदर ये Yes, तो ma'am. टिकी होती है ना. हम चाहे लकड़ी का फ्रेम हो, ठीक है, या वो प्लास्टिक का फ्रेम हो या वो किसी भी चीज का फ्रेम हो, उसी के अंदर क्या होती है? फोटो क्या होती है? हमने पेस्ट की हुई होती है. जब पेस्ट फोटो Yes, जब ma'am. हम फ्रेम के अंदर पेस्ट करते हैं, ठीक है, तभी क्या होता है? वो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम होता है. ठीक है. तो क्या होता है? लाइक दैट आवर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो हैव अ फ्रेम. व्हाट इज दैट? What is the structure and what is the frame of human body? Can you tell me something? Hmm? हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी है बेटा? Ma'am, व्हाट इज द मेन पार्ट? स्टिफ पार्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है जो हमारी बॉडी का. व्हाट इज दैट? ओके. ma'am, bones. यस. जस्ट टच इट. व्हाट यू फील इनसाइड इट? Ma'am, heart. हार्ड पार्ट ना. व्हाट इज दैट हार्ड Yes, पार्ट? ma'am. दैट हार्ड पार्ट आर bones. Bones. Okay. So our body and our body, human body is made up from the bones. Bones. So the structure is called, the frame or the structure is called skeleton system. What is Skeleton that system. called? Skeleton system. We Skeleton didn't system. discuss about the skeleton system ना. हमने अभी Yes, तक ma'am. skeleton system के बारे में नहीं पढ़ा. Okay. No, I am ma'am. just sharing the screen. Okay. Okay. Can you see it? What is this? Ma'am, skeleton. Yes, this is the skeleton of human body, right? So, introduction. With its highly engineered joints, the living skeleton is intimately connected with the muscular system. With its highly engineered joints. What is the meaning of this? Joints. Joints means क्या होता है बेटा? What do you understand by joints? Ma'am, जोड़. Joint means जोड़. board. What क्या होते हैं जोड़? आपको मेरी visible हूँ मैं? Yes, What ma'am. are the joints? These. From where we can move the body part. Move. Right? So this Yes. one also. मैं इसे यहाँ से turn कर पा रही हूँ ना? So from where I can turn? That is, तो ये यहाँ इसका और इसका joint क्या है ये? ठीक है? This one is Okay. joint. All right? Yes, ma'am. This Yes, elbow ma'am. is joint. So with its highly engineered joints, the living skeleton is intimately connected with the muscular system. ठीक है. जो इसके joints होते हैं, ठीक है, highly engineered, बहुत अच्छे से क्या है, join करे हुए जो joints होते हैं, इनकी वजह से the living skeleton is intimately connected with the muscular system. What is the meaning of intimately? What do you understand by intimately? Muscular system. Intimately, अंदर से. ठीक है. Intimately from Yes, means ma'am. inside, from the inside connected with the muscular system. तो जो वो होता है हमारा skeleton system है, ठीक है, वो क्या है? मसल से join हुआ हुआ है. Muscle Okay? joint. It provides Yes, a ma'am. framework of stiff levers and stable plates that permits a multitude of movement. ठीक है. तो ये क्या करता है? It provides a framework. ये हमें क्या provide करता है?
framework of stiff levers. Framework. And yes, and stable plates that permits a multitude of movements. All right. Next, the skeleton also integrates functionally with the cardiovascular system, as every second millions of fresh blood cells pour out of the bone marrow. ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो बोन मैरो होता है, ठीक है, उसमें से क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ फ्रेश ब्लड सेल्स निकलते हैं बाहर, ठीक है, एवरी सेकेंड, ठीक है। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, उनको, उनके जो फंक्शन है उनको क्या करता है, बताओ। What yes, tell me. क्या करता है उसे, उस फंक्शन को चेक करता है, ठीक है, कि फंक्शन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द स्केलेटन सिस्टम विच these are the features, the parts and names of the parts. Okay, can you see it? What are they? Yes, ma'am. Wait. This is skull, right? This is called skull, right? Yes, ma'am. This is jawbone. Okay. This is collarbone, right? Then this is, can you read? Just read. I am moving the cursor. Just read and tell me which part is that. Tell me. This is, what is this? In our language, what is that? इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में? Ma'am. This part. क्या बोलते हैं बेटा? ये वाला पार्ट होता है ना, जॉइंट, ये वाला जॉइंट, इसे क्या बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं? कोनी। कोनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? एल्बो. All right. Elbow. Yes, ma'am. Then this is the thigh bone. All right. This is the vertebral column. Okay. This is hip bone, or we can say pelvis. All right. So Yes, let's ma'am. a healthy diet that provides enough minerals, especially calcium, along with regular moderate exercise can reduce the risk of many bone. Okay, a healthy diet, एक जो हमारी हेल्दी डाइट होती है, ठीक है, आपने सुना होगा, आपको क्या बोलते हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए हमें, ठीक है, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, है ना, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। हम लोगों को ऐसा फूड लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या हो, सारी चीजें इंक्लूड हो, ठीक है, और जंक फूड नहीं लेना चाहिए हमें, ठीक है। तो एक हेल्दी डाइट जो होती है दैट प्रोवाइड्स इनफ मिनरल्स, तो हमें जो हेल्दी डाइट होती है, ठीक है, वो हमें सारी चीजें प्रोवाइड करवा देती है, मिनरल्स, स्पेशली कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोन्स, ठीक है। हमारे स्केलेटन सिस्टम को मजबूत रखने के लिए क्या जरूरी होता है? कैल्शियम, ठीक है। हमारी बोन्स कैल्शियम, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो along with regular moderate exercise can reduce the risk of many bone. Okay, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कैल्शियम है उसे अच्छी मात्रा में लेते हैं, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में हम लोग कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारी बोन्स है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है, हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। So I just want to show you a video about it. You want to see the video or not? Yes, ma'am. Okay. Then we will discuss further. Okay. Till here, just see the video. The skeletal system. The video is visible? It's visible or not? Yes? Okay. Yes, ma'am. Controls the supply of blood in the body. Okay. In this Yes, chapter, ma'am. we are going to learn about the skeletal system. Yes, this is the, Our you can see. Wait. This is the skeleton system. I show you. मैंने आपको अभी पिक्चर में शो किया था ना स्केलेटल सिस्टम,
ठीक है, Yes, ma'am. हम इसके बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया, This chapter, ये we are going to दिस इज द skeletal system again, right? learn about the Yes, ma'am. skeletal system. Our skeleton. We know that our body has different types of bones in it. The bones together form a framework called the skeleton. The skeleton protects the delicate internal organs such as the brain, the heart, and the lungs. It gives shape to our body. It also allows movement of our body. When we are born, our skeleton has around 350 bones. When we become an adult, our body has around 206 bones. This is because as we grow, some of the bones join together. With the growth of our body, more cells increase in our bones and our bones become longer than earlier. Bones. Bones contain blood vessels and nerves. Bones have an outer layer of hard or compact. Yes, can you see the bone marrow here? This is the bone marrow, right? And I Yes, told ma'am. you that जो bone marrow होती है, अभी आपको बताया ना कि वो every second millions of blood cell क्या करती है, release करती है. So you can see the red Release. part here. आप ये red part Yes, देख ma'am. पा रहे हो bone marrow का, ठीक है? ये bone Yes, marrow ma'am. millions of red blood cells क्या करती है, every second release करती है, ठीक है? जो क्या होते हैं हमारी body में dilute होते रहते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. Bones, which is very strong, dense, and tough, but inside they have a layer of spongy bones which is lighter and slightly flexible. In the middle of some bones is a jelly-like substance called bone marrow. In the bone marrow, the new cells are constantly produced for the blood. If broken, they repair themselves in several weeks. Our skeleton is made up of the skull, the backbone, the rib cage, the two pairs of limbs, and their girdles to which they are attached. So when I came to US, I was very new to English as well as American English. I used to write words. The skull. The skull is the bony framework of the head. It protects our sensitive brain. There are spaces in it for our eyes, ears, nose, and mouth. There are 8 bones in our skull that are interlocked with each other and make the protective frame around the brain. There are 14 facial bones which make the upper and lower jaws and other facial structures. The lower jaw bone is the only movable bone in the face. It enables us to talk, eat, etc. The spine or backbone. Our backbone has 33 small bones called vertebrae that form a very strong column known as the vertebral column or the spinal column, spine. The vertebrae can move slightly through the joints, so we can bend or twist our back. There is a hole in each vertebrae through which the delicate spinal cord passes. The spinal cord is protected by the vertebral column. The rib cage. The ribs are thin, flat, curved bones that form a protective cage around the organs on the upper body. There are 24 bones that make 12 pairs of ribs. Our rib cage protects our heart and lungs. The ribs are joined to the backbone at the back. The upper 7 pairs of ribs, called true ribs, are attached to the breastbone in front. The next 3 pairs of ribs, called false ribs, are attached to the lower true ribs in front. The lowest 2 pairs of ribs, called floating ribs, are not connected to any organ in the front. They are smaller than both
the true and false ribs. The limbs, our arms, are the upper limbs attached to the spine by means of the shoulder girdle made up of the shoulder blades and collar bones. It consists of 3 parts: the arm, the forearm, and the hand. The arm is the region between the shoulder and elbow. It consists of a single long bone called the humerus. The forearm is the region between the elbow and the wrist. It consists of 2 long bones connected firmly to the humerus. The hand consists of 3 parts: wrist, palm, and fingers. You are getting the point? आपको समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. The humerus is the longest bone in our upper limb. The lower limbs, legs, are composed of the bones of the thigh, leg, and foot. The thigh is the region between the hip and the knee. It consists of a single bone called the femur or thigh bone. It is the longest, largest, and strongest bone in the body. The leg is the region from the knee to the ankle. It consists of 2 long bones called the shin bone and the calf bone. Shin bone is longer than the calf bone. These bones are connected to the femur to form the knee joint. The foot contains many small bones. The bones of the lower limbs are the heaviest, largest, and strongest bones in the body. Because they bear the entire weight of the body when a person is standing in an upright position. Joints. We know that many of our bones are joined together. The place where 2 bones meet is called a joint. Our skeleton is very hard, but it can bend or move because of these joints. Strong, stretchy bands of tissue called ligaments hold these bones together. There are different kinds of joints in our body that allow different movements. Except for the joints in our skull that are immovable, all other joints are movable. The skull bones are immovable as the 8 bones are interlocked. The lower jaw bone is the exception, which is the only movable bone in the skull. Hinge joint. Try to move your knees and elbows in all possible ways. What do you notice? You are unable to move them in more than 2 directions. This is because our knees and elbows have joints called hinge joints. In hinge joints, convex surface of one bone fits smoothly into concave surface of the second bone. This type of movable joint allows the knees and elbows to move only in 2 directions like a door. The hinge joints are very strong, but they move easily. Our elbows, knees, toes, and fingers have hinge joints. Pivot joint. There is a joint between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. It helps to move our head upward, downward, and sideways. This joint is called the pivot joint. In pivot joint, a rounded or conical surface of the bone is inserted into a ring made in another bone. So what is pivot joint? We can move like this. Okay? You can move? Yes, ma'am. Just do Yes, it. ma'am. Can you move? So because of this joint, ठीक है? अगर ये यहाँ पर joint ना Yes, होता ma'am. हमारे, ठीक है? ये pivot joint नहीं होता यहाँ पर, ठीक है? और ये एकदम से क्या होती? जुड़ी हुई होती, ठीक है? तो हम इसे ऐसे मूव नहीं कर पाते. हम आगे देख पाते हैं, हम Yes. पीछे देख पाते हैं,
ठीक है, वो किसकी वजह से है? पाइवट Yes, जॉइंट ma'am. की वजह से, ठीक है। Yes, ma'am. This allows only the rotational movement. Ball and socket joint. Some of the long bones have a round ball-like structure at one end. This Can you give me the example of ball or socket joint? Ball like joint कहाँ पर होता है? Can you feel in your body anywhere? Yes, ma'am. Touch it, touch it. Do it like this and touch. What shape is feeling? Ma'am, circle. Circle, ball like shape. Okay, just check Yes, your ma'am. ये घुटने को भी चेक करो अपने, नी में भी चेक करो, वहां पर भी आपको बॉल लाइक सर्कुलर शेप फाइंड होगी। Yes, Yes, ma'am. that are ball joints. Okay. ball fits into Yes, a ma'am. socket-shaped hollow part in another bone. This type of joint allows the maximum movement in every direction and is called the ball and socket joint. Our hips and shoulders have such joints. Gliding joint. Our wrists and ankles have joints that allow the bones to slide over each other so we can move them. Such joints are also found between any two vertebrae of the spine. They are known as gliding joints. This kind of joint allows us to bend, turn, and twist our back. If there were no gliding joints in the back, we would feel and behave like wooden puppets. Muscles. Almost half of the weight of our body is muscles. Muscles are the part of our body that allow us to move. They are made of special tissues that can contract or shorten when they receive a signal from the brain. Bones and muscles work together. The muscles are attached to bones by stretchy tissue called tendons. When the muscle contract, they pull on the tendons, which pull on the bones and cause our limbs to move. There are more than 640 muscles and they work together with bones. Care of bones and muscles. Now you can easily understand the importance of bones and muscles in our body. They are responsible for movement in our body. We must keep our bones and muscles in good shape for a healthy life. We should consume calcium and protein-rich food items such as egg, milk, meat, etc. for healthy bones and muscles. We must exercise daily and always sit or stand in correct posture. It helps us to keep the bones developed and strong. We must protect our body while playing, driving, etc. Know this, the ears and nose do not have bones inside them. Their inner supports are cartilage, which is lighter and more flexible than a bone. That is why the nose and ear can bend. Know this, the skull is made up of 8 bones joined together. Okay. So I'm sharing the screen back. Okay. Wait. Yes. Where was we? Yes, the central nervous system lies largely within the axial skeleton, the brain being well protected by the cranium and the spinal cord by the vertebral column by means of the bony neural arches
Wait, what happened? Wait, क्या हुआ है? Sorry. Intersecting facts about the skeleton. The skeleton makes up almost 1/5 of a healthy body's weight. So अभी आपने वीडियो में भी देखा, जो हमारा skeleton system है, ठीक है, वो makes up almost 1/5 of a healthy body's weight. ठीक है, हमारी बॉडी का जितना वेट होता है, ठीक है, उसका 1/5 क्या कवर करता है? स्केलेटन. ठीक है. This flexible Yes, ma'am. inner framework supports all other parts and tissues which would collapse without skeletal reinforcement. Okay, this flexible inner framework supports all the other parts and tissues. ठीक है, जो ये framework होता है skeleton system का, ये क्या करता है? Supports all the other parts and tissues. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारा skeleton system नहीं होगा तो क्या हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं या फिर और पार्ट्स है वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आवर स्केलेटन सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, हम उसी की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारी बॉडी का. ठीक है. Structure. Yes. So this flexible inner framework supports all other parts and tissue. जो हमारा skeleton होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हमारा फ्रेमवर्क, मतलब skeleton का फ्रेमवर्क हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करता है. Okay. Yes, ma'am. It also protects certain organs such as the delicate brain inside the skull. It also protects certain organs. ठीक है, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स कैसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है, लाइक द ब्रेन. ठीक है, हमारे स्कल के अंदर हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन इज वेरी सॉफ्ट एंड ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट. सो जो हमारा स्कल होता है, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्केलेटन. ठीक है, वो किससे बना होता है? हमारी बोन से बना होता है ना स्कल. ठीक है, और वो क्या करता है? हमारे ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन विच इज सर्टेन मैं पार्ट, protect करता है. उनको प्रोटेक्ट करता है. वेरी गुड. बोन्स आर reservoirs of important minerals, especially calcium, and also make new cells for the blood. ठीक है, बोन्स क्या करती हैं? उनमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, स्पेशली कैल्शियम. ठीक है, हमारी बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम होता है. इसलिए हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैल्शियम को खाना चाहिए ना. Calcium. ठीक है, Yes, कई ma'am. लोग होते हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है, वो कैल्शियम की मेडिसिन भी लेते हैं. ठीक है, लेते हैं ना. Yes, ma'am. दूध से हमें बोलते हैं ना, बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कैसी होती हैं? स्ट्रांग नहीं होती हैं. ठीक है, तो बच्चों को दूध पीना चाहिए. किस लिए? कि दूध में क्या होता है? मिल्क में क्या होता है? कैल्शियम होता है. Calcium. ठीक है, एंड कैल्शियम क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रांग करता है. ओके. Strong बनाता है. Yes. About 1% in 20 has an extra rib. Okay. About 1% in 20 has an extra rib. एक पर्सन में 20 से ज्यादा एक्स्ट्रा रिब होती हैं. Okay. Bone is an active tissue and even though it is about 22% water, it has an extremely strong yet lightweight and flexible structure. ठीक है, एक बोन क्या है? एक्टिव टिश्यू है. ठीक है, बोन भी क्या है? एक एक्टिव टिश्यू है. एंड सॉरी, एंड इवन दो इट इज अबाउट 22% वाटर, हमारी बोन में क्या होता है? 22% वाटर. इट हैज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग येट लाइट वेट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर. मीन्स जो हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होती हैं बट लाइट वेटेड और फ्लेक्सिबल भी होती है. ठीक है. A similar frame made of high technology composite materials could not match the skeleton's weight, strength, and durability. It's as strong as steel but light as aluminium. ठीक है, तो हमारा जो फ्रेम है इसका स्केलेटन सिस्टम का, ठीक है, वो क्या है? उसकी जो वेट है, स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या है? हाई टेक्नोलॉजी कंपोजिट मटेरियल. मतलब कि वो क्या होती है?
मैच नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एज Yes, स्टील। ma'am. आपको बताया ना, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने कि वाटर से बनी होती है, ठीक है। Ma'am. तो बोन्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है बट लाइट वेटेड भी होती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होता है उनका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वैसे ही इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, स्टील की तरह वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, बट लाइट एज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की तरह लाइट भी होती है, ठीक है। It can repair itself if damaged and can remodel its bones to thicken and in areas of extra stress when person do extreme sports. ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाती है किसी वजह से, ठीक है, तो इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, ठीक है, ये क्या है, अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिपेयर भी हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द skeleton system again, okay, 206 bones, you know a human body have Yes, ma'am. 206 bones, okay. Yes, ma'am. It is made up of cartilage and ligaments also. Okay. Ma'am, Hmm. ma'am, our newborn baby has 300 bones. Yes. A newborn baby has 300 bones. अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, वीडियो में भी बताया था आपको, है ना। Yes, पर ma'am. क्या होता है, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, ठीक है, तो कुछ बोन्स क्या होती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। जस्ट टेल मी विच इज द स्मॉलेस्ट बोन, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, कहाँ की होती है, यू नो। No, ma'am. No, ear. Okay. Yes, All ma'am. right. Ligaments. So, what are ligaments? Can you tell me something about ligaments? Yes. Can you tell me something about ligaments? What are ligaments?